बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सो अब हमारा ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है इस वीडियो का। हमने DCCS कैसे पढ़ना है वो कवर कर लिया, डेवऑप्स कैसे पढ़ना है वो कवर कर लिया, डेवऑप्स के तमाम कोर्सेज कौन से क्रिटिकल हैं वो हमने बात कर ली। सिसऑप्स के अंदर तमाम कोर्सेज 5 ही हैं, वो 5 के 5 क्रिटिकल हैं। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दैट। अगेन मकसद क्या है? पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, डोंट वरी, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। अभी तुम सिर्फ आगे बढ़ो। तुमने अगर 400-500 वो आवर्स भी कर लिए, तुम इस काबिल हो जाओगे कि ना सिर्फ तुम जो हो बेसिकली एजुकॉल का एग्ज़ाम पास कर सकोगे, बल्कि उसके अलावा 600-700 घंटे के ऊपर तुम एजुकॉल के सारे क्वेश्चंस पास कर सकते हो, राइट। और उसके बाद जो है ना, तुम उसको पहले दिन से ले शुरू कर सकते हो। एजुकॉल तो तुमने चाहे कोर्सेज मुकम्मल ना भी किए तो भी तुम कर सकते हो। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट मतलब कि एक्सरसाइज कोई इतनी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज नहीं है। जो की चीज़ है, जॉब पे जाकर बैठना है, वो हमारा की मकसद है, राइट। सो अगर हम वापस पोर्टल में जाते हैं और वापस पोर्टल को देखते हैं, तो पोर्टल में हमें फिर नज़र आता है डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब हम ज़रा इसका ओवरव्यू देखते हैं, क्या इसका ओवरव्यू कैसा है, हम ज़रा ये भी देख लेते हैं। और यहाँ पर जो कोर्सेज हमारे हैं जो क्रिटिकल हैं सिसऑप्स के अंदर, वो ये है। ये तमाम कोर्सेज सब के सब क्रिटिकल हैं। ऑल ऑफ देम आर ऑल क्रिटिकल कोर्सेज, सो यू मस्ट complete these courses. So let's go back to the diploma in AI and look into it. So when you go into the portal, you will see again free preview. Just leave that. I mean, इसमें आपको तमाम उसकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता चल जाएंगी कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं. But jump into the the program. The program is artificial intelligence. ये key courses हैं इसके, जिसको आपने पढ़ना है. Now there is one thing I would like to highlight. There is journal AI. Then there is generative AI. Generative AI makes things way easier because आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उससे बातचीत कर सकते हैं, आप उसकी चीज़ें, वो आपकी लैंग्वेज समझ सकता है, आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है। जिस तरीके से दुनिया में AI में इन्हांसमेंट्स हो रही हैं, अ टाइम विल कम दैट मैथमेटिक्स विल बिकम इररेलेवेंट। द रीज़न इज़ के यू विल हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आपको इतनी मैथ्स आती हो, नॉट दी एडवांस मैथ्स, बट इतनी मैथ्स आती हो दैट यू आर एबल टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम AI फ्रॉम अ जर्नल ह्यूमन परस्पेक्टिव। ठीक है। तो अगर आप किसी कंपनी में AI में काम करते हैं और आप डेवऑप्स के अंदर AI में काम कर रहे हैं, या सिसऑप्स में AI पे काम कर रहे हैं, या आप जो है ना साइबर सिक्योरिटी में कर रहे हैं, या GRC में कर रहे हैं, या अकाउंटिंग या फाइनेंस या वट एवर द केसेस, अगर आपने ये तमाम चीज़ें जो कोर्सेज हैं इनको जल्दी से स्किम भी कर लिया, स्पीड थ्रू भी कर लिया, आई मीन जूम थ्रू भी कर लिया, जल्दी 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 देखते जा रहा हो, ठीक है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। दैट इज़ एक्सेप्टेबल बिकॉज अगेन एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था, रिमेंबर यू हैव टू कीप ऑन रीविजिटिंग दीज कोर्सेज। सो इवन इफ यू गेट द जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्सेज इन एजुकॉल एग्जाम, you have to keep coming back and keep on watching these courses and keep on then taking notes. फिर तुम लोग नोट्स लेना शुरू करो, सब कुछ करना शुरू करो। बिल्ड अ हैबिट, बिल्ड अ रीडिंग हैबिट। तुम्हारे पास रीडिंग हैबिट हो, तुम्हें पता हो कि क्या हो रहा है। सो गोइंग बैक, यहाँ पर जो क्रिटिकल चीज़ें हम उसके ऊपर देखते हैं, तो AI का कोर्स करना, पाइथन प्रोग्रामिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एडवांस टॉपिक्स इन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डीप डाइव, मशीन लर्निंग, मॉडल डेवलपमेंट, कंप्यूटर विजन, NLP, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग। ये तमाम कोर्सेज आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। पढ़ने का क्या मतलब है? बस जल्दी जल्दी वॉच कर रहे हो, आगे कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, आगे कर रहे हो, दैट्स इट। यू विल बी एबल टू पास द एग्जाम। मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा। सो लेट्स गो बैक टू द मेन वाइट बोर्ड जिसमें हम सारा काम कर रहे थे। लेट्स गो बैक। सो अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हमारा पार्ट 4 आ गया है। पार्ट 4 क्या है आपका? पार्ट 4 इज़ बेसिकली AI, राइट। आपको 4 कोर्सेज मिलते हैं ना। सो पार्ट 4 इज़ AI, और वो सारे कोर्सेज आपको जल्दी जल्दी करने। AI में आप क्या सीख रहे हैं? AI में आप सारे जो क्रिटिकल टास्क्स हैं, ठीक है ना, वो तमाम जो जर्नल AI है, जर्नल AI के हिसाब से, जर्नल AI के साथ साथ, यानी कि एक तो आप जर्नल AI सीख रहे हैं, ठीक है, फिर आप उसके साथ जो है ना डीपर कॉन्टेक्स्ट जो है ना, डीप लर्निंग सीख रहे हैं, मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सीख रहे हैं, कंप्यूटर विजन, CV, ऑल द की एस्पेक्ट्स जो उसके हैं हम सब कवर कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ इनके अंदर जो ख़ास लैब्स हैं, अब उस लैब्स पे मैं आऊँगा और उस पर बात करूँगा।
इन तमाम की जो लैब्स हैं उनका जो कॉन्टैक्ट्स है वो भी अब कवर हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी कवर अप हो रही हैं, ठीक है ना, दैट इज़ अनदर पार्ट जो हम कवर कर रहे हैं। ये जो पूरी इनकैप्सुलेशन है ना इसकी, तो अब आप जब कहीं जाते हैं तो आपके पास ये तमाम की स्किल्स हैं, आपके पास ये तमाम की स्किल्स हैं, आपके पास ये तमाम की स्किल्स हैं, और आपके पास ये भी की स्किल्स हैं। और फिर इनकी जो इन्फ्यूजन है, अब इनकी इन्फ्यूजन क्या है, ये आती हैं RQF की लैब्स, राइट। सो अगर मैं वापस उसके ऊपर जाऊँ आपके पास, लुक एट इट, AI इज़ द फोर्थ पिलर, आपका पार्ट 4 भी हो गया। इसके बाद आता है ये, ठीक है ना। तो AI के अंदर भी अगेन आपका मकसद क्या है, जल्दी प्रोसेस करना ना। अगर मैं इसके तमाम आवर्स निकाल लूँ कि यार टोटल कितने आवर्स बनते हैं, DCCS के अंदर आपके 300 की घंटे हैं प्राइम, यानी कि फोकस्ड। डेवऑप्स के अंदर 200, ये हो गए 300 प्लस 200 500। सिसऑप्स के अंदर आपको मिलेंगे 200 मैक्सिमम, 150 to 200। 500 प्लस 200 कितने हो गए, 700। AI के अंदर आपको मिलेंगे 200, 700 प्लस 200 800। ये 800 घंटे आपके की फोकस घंटे हैं जिस पे आपने काम करना है। अगर आपने ये काम कर लिया और आपने वो तमाम RQF की लैब्स कर ली, विच इज़ द फाइनल पार्ट इज़ द RQF लैब्स ऑफ 5 and 6। If you go back into the portal, you will see these labs. ये आपको नजर आएंगी। Let's go back into the portal. ये हैं DevSysOps की labs. So if you click on it, और इसी तरीके से आपको DevSysOps के बाद आपको AIOps की labs भी नजर आएंगी। Because remember, this is built upon the foundation of all the key things। और वो मैं आपको भी explain करूँगा कि क्या है, ठीक है ना, key elements क्या हैं। तो अब अगर मैं वापस उसमें जाऊं तो हमारे जो की एलिमेंट्स हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो इफ़ यू गो बैक, ये जो आपकी जो लैब्स हैं सारी DevSysOps की RQF लेवल 5 की लैब्स हैं, ये आपको करनी है। ये लैब्स क्या हैं, ये लैब्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ये लैब्स आपको अगर आप मंथली पर हैं आपको 10th 11th मंथ में मिलेंगी, समथिंग लाइक दैट। चेक दिस, आस्क द सपोर्ट, दे विल लेट यू नो। अगर आप एनुअल पे हैं आपको एनुअल पे फ़ौरन पूरा एक्सेस दे दिया जाएगा। तो आप जल्दी कोर्सेज ख़त्म करते करते इन लैब्स को करना शुरू कर दें। इन लैब्स को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन लैब्स के अंदर आपको वो तमाम चीज़ें करवाई जा रही हैं, तमाम चीज़ें समझाई जा रही हैं, जिसकी वजह से आपको तमाम चीज़ें पे हैंड्स ऑन काम आ जाएगा। आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। फॉर एग्जांपल, अब डॉकर्स डीप डाइव 1 की लैब्स है। पहले आपने डॉकर डीप डाइव जो है ना वो आपने डेवऑप्स में पढ़ लिया, लेकिन DevSysOps के अंदर क्योंकि ये बिल्ड अपॉन द फाउंडेशन है, ठीक है, तो ये डॉकर्स डीप डाइव 1 कहलाता है। और इसी तरह जब ये RQF लेवल 6 की लैब्स आएंगी तो वो डॉकर्स डीप डाइव 2 कहलाएगा। इसके अंदर क्या है, सेटिंग अप AWS EC2 इंस्टेंस फॉर डॉकर, बिल्डिंग अ बेसिक डॉकर इमेज एंड पुशिंग टू AWS, बिल्डिंग अ बेसिक, इसके बाद है रनिंग डॉकर्स कंटेनर ऑन AWS इलास्टिक कंटेनर। यानी कि हमने क्या किया है, यहाँ पर हम आपको ये 100 लैब्स हैं, 100 लैब्स समथिंग 100 के बैच में हम रिलीज़ करते हैं। वी विल कीप ऑन रिलीजिंग दीज लैब्स एवरी 3 months। इसका जो टोटल कंटेंट है, अगर आपको सारी लैब्स करनी है हैंड्स ऑन करके सब कुछ करके, इट्स अराउंड 60 आवर्स, समथिंग लाइक दैट, 50 to 60 आवर्स, राइट। अगर ईच लैब भी आपकी जो है ना 20 मिनट्स की भी है एंड यू हैव 100 लैब्स, ठीक है, तो 2000 मिनट्स आपके बनते हैं, बट इतने होते नहीं हैं। आई मीन सम ऑफ द लैब्स आर स्मॉलर, सम ऑफ द लैब्स आर बिग। ऑन एवरेज अगर 15 मिनट्स की भी लैब है और आपकी 100 लैब्स हैं तो 1500 बनते हैं। इफ़ यू डिवाइड बाय 60 दैट गिव्स यू रफली 25 आवर्स। ये जो चीज़ है, ठीक है ना, इसमें आपको तमाम चीज़ें करवाई जा रही हैं। जब आप ये लैब्स करें ना, आप अपनी गिटहब पे अपडेट करते रहें, मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने इसका डॉकर से कंटेनर चलाया, ये किया। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाउड एंड नेटिव टेक्नोलॉजीज, क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज जो क्लाउड पे रन करती हैं, एंड नेटिव ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज जो ओपन सोर्स हैं। आवर फोकस इज़ टू टीच यू ओपन सोर्स, ठीक है। अगर आपने AWS की सर्टिफिकेशंस कर ली, AWS की सर्टिफिकेशन करने से आपको कोई काम नहीं आएगा, आप कहीं जाके जॉब सिक्योर नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुमने ये डिप्लोमा पढ़ लिया, तुम्हें accredited सर्टिफिकेशन मिल रही है, तुम्हें इक्वलेंसी मिल रही है, तुम्हारा इंटर्नशिप हो रही है, तुम्हारे पास हैंड्स ऑन स्किल्स आ गए, और तुम्हें वो सारा काम जो कि कंपनीज को चाहिए तुम्हें आता होगा। मैं अगर तुम्हें इसमें दिखाऊं, एंड अगेन ये फर्स्ट इटरेशन, इसकी इटरेशंस आती रहेंगी, ठीक है ना।
इसमें अगर आप देखोगे उसकी नेटवर्किंग सब चीज़ें करवाई जा रही हैं। फिर इसके अंदर बैश स्क्रिप्ट्स की अलग लैब्स हैं, ठीक है ना, कि AWS के अंदर बैश स्क्रिप्ट्स को क्या करना है, डॉकर और बैश स्क्रिप्ट के साथ क्या क्या काम करना है, ठीक है। इसी तरीके से ऑटोमेशन के अंदर अलग लैब्स हैं, पाइथन ऑटोमेशन और डॉकर और बैश स्क्रिप्ट को मिलाकर लैब्स बनाई गई हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ हम टॉपिक्स को मिला मिला के लैब्स बना रहे हैं। हमने तुम्हें डॉकर पढ़ाया, डॉकर की लैब करवाई, बैश पढ़ाया, बैश की लैब कराई, पाइथन ऑटोमेशन पढ़ाया, पाइथन ऑटोमेशन की लैब कराई, तीनों को AWS के ऊपर करवाया। इसके बाद हमने तीनों को मिला दिया, डॉकर बैश के साथ पाइथन ऑटोमेशन को यूज़ करते हुए क्लाउड पे ही डिप्लॉय करो। फिर वो AWS के ऊपर भी डिप्लॉय होगा, फिर अज्योर के ऊपर भी डिप्लॉय होगा, फिर GCP के ऊपर भी डिप्लॉय होगा। यू सी, इसकी डिफरेंट इटरेशंस आएंगी ताकि तुम दुनिया में कहीं पर भी जाओ, जिसमें तुम्हें दिखा रहा था पिछली वीडियो में कि दुनिया के जो प्राइम क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, AWS, अज्योर, GCP, IBM, Salesforce, Alibaba, I mean we will cover all of them as much as we can, but the idea is कि तुम्हें उसके ऊपर काम करना आ जाए। Wherever you are sitting, this course enables you कि तुम्हारे पास वो तमाम नॉलेज है कि तुम दुनिया में कहीं पर भी बैठकर कोई भी काम कर सकते हो, अपनी कंपनी खोल सकते हो अगर तुम्हें अपना काम करना है। बट आई वुड रिकमेंड यू, व्हाट इज़ माई रिकमेंडेशन, आई वुड रिकमेंड यू कोर्स पढ़ो, काम सीखो, इंडस्ट्री में काम करो, अपने मुल्क से बाहर निकलो, wherever you are, secure your immigration status wherever you are, like, you know, get another country passport. It opens doors for you, for those who have weaker passports, because in today's world there's a lot of basically जो है ना injustice है, because your passport dictates, you know, your status. So if you have a blue passport or something like that जो कि तुम्हारे पास G7 countries का है, it helps, right? So my recommendation is to go there, work, settle down, then think about establishing the companies. As I said, there are 334 million companies around the world. The population is 8 billion. World population will keep on increasing, right? लोगों को सर्विसेज चाहिए होंगी, लोगों को नई चीज़ें चाहिए होंगी। अभी भी दुनिया में ऑटोमेशन अभी तो इंटर होना शुरू हुई है। This age, the next 25-30 years will all be about generative AI infusion in every walk of life. Generative AI को दुनिया की तमाम चीज़ों के अंदर वो लोग डाल रहे हैं और वो इन्फ्यूज़ करते रहेंगे, कस्टमर सपोर्ट में, सेल्स में, कस्टमर इंटरेक्शन में, कस्टमर पर्सोना बिल्डिंग में, डेटा साइंस will pretty much be tackled by AI itself, because AI will be able to give you much more basically correlated and harmonized data, right? तो वो उसको स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर को खुद ही कर सकता है, खुद ही ठीक कर सकता है। आई मीन डेटा साइंस विल गेट इम्पैक्टेड हैविली, बट जो अदर चीज़ें हैं उसमें आपको जब तक AI सीख रहा है, बिकॉज इंडस्ट्री के अंदर कोई भी चीज़ इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करते कि आप जो है ना बिल्कुल जॉबलेस हो जाए, बेरोजगार हो जाए। नो, दे वॉन्ट पीपल टू गेट इन द जॉब्स सो दैट दे कैन कीप ऑन सेलिंग स्टफ, राइट? अगर ऐसा कर दें कि कोई चीज़ बेच ही ना सकें तो फिर तो दुनिया सारी ख़त्म हो जाएगी। आई मीन then the world will end, because you need to keep on selling stuff, right? So that way, I mean, organization, तुम्हारे पास बहुत अच्छी opportunities है that you can start establishing your halal companies, you know, your permissible companies, whatever is permissible for you as per your faith. As a Muslim, you know, we have to comply with strict code of ethics that we have to do, ठीक है, and which is very prominent in our religion. How we deal with people financially, and how we do our stuff, how we honor our words, and chivalry and bravery and all of those things, they are part of our life, right? Part of the fabric of who we are as Muslims. So wherever you are in the world, do study Islam at one point in time, because it will give you some information and it will remove the misconceptions you may have because of the media or whatever the case is. Because ये जो पूरा इंस्टीट्यूट है, we established this institute on the basis of Islamic principles. That's how Muslims were leading, you know, the scientific arena long ago, all through Islam, right? And the infusion of Islam. So anyway, so this is how you have to study. If I go back in the next video, I will basically show you the different foundations and how to wrap around all of these things. If I have to go back and show you one thing which is very important. So ये सारी चीज़ें तुमने सीख ली, अब अगर इसको मैं देखूँ, this is what defines DevOps, ठीक है ना?
डिप्लोमा इन AI Ops. So डिप्लोमा इन AI Ops में जब आप ये सारे skills लेके जाते हैं, then you can essentially become, you know, a formidable force in order to deal any job opportunity, you know, you want to go in. And the reason मैं सबको बोलता हूँ उसको साथ पढ़ना is because you understand the key business perspectives, because you have certain जो है ना तुम्हारे पास opportunities हैं जिसमें तुम जा सकते हो. इस वक्त दुनिया में G20 countries के अंदर the G7, which is the European Union and the Americas, the Australia, the New Zealand, all of these countries, Canada, wherever you are, or wherever you want to go, Japan, whatever the case is, there's a lot of innovation going on. And if you have the diploma in AI Ops, this will help you in immigration status. Absolutely yes. इसमें आपको वो होगा. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका कि क्या है, किस तरह से है. बट अगर मैं किसी को बोलूं कि डिप्लोमा इन AI Ops क्या चीज़ है, सो RQF Labs जो हैं, दैट इज़ अनदर पार्ट, एज आई सेड, ठीक है ना. RQF 5 Labs, which is a combination of DevOps plus SysOps. Okay? And then there is another lab part which is RQF level 6. Level 6, which is again the ये सब आपको अंदर नज़र आएगा, अपने पोर्टल में नज़र आएगा, ठीक है ना. which is DevOps plus SysOps plus AI, and specifically generated AI, generative AI, right? So ये सारा focus है. This whole thing, when encapsulated together, right? This whole thing, when it is encapsulated together, is AI Ops. This is AI Ops. ये AI Ops को define करता है. This is what defines AI Ops. कि आप, you become an individual which has deep skills and deep knowledge to ace any interview whatsoever, right? And that's why EduCall का एग्ज़ाम कैसे पास करना है, क्या करना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सब चीज़ें एक्सप्लेन करता मैं आऊँगा. बट इफ़ यू डू दिस, no one, and I mean no one, can stop you. And I'm going to show you like some of the things कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिसको काम आता है उसको वो लोग जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, right? I'm going to show it to you. So you have a golden opportunity to study AI Ops. The core teaching all together is not more than 800 to 900 hours. Don't look at the hours जो वहाँ पर mentioned है, because when we go for the EduCall accreditation, we have to mention the TC, they call it the TCT, total contact hours, right? The total contact, something like that, right? So the TCH or something, the total contact hours. So total contact hours हम कैसे calculate करते हैं? If the course is of 30 hours, then we add 20 hours of reading time and 10 hours of live interaction time. That comes up to 60 hours. अगर कोई कोर्स 30 घंटे का है तो उसमें 10-20 घंटे आपने रीडिंग के डाल दिए, 10 घंटे आपने उसके लिए डाल दिए, इंटरेक्शन, लाइव इंटरेक्शन के टोटल 60 आवर्स हो गए. बट एसेंशियली इट्स अ 30-hour कोर्स, राइट? अगर आपने तमाम चीज़ों पे फोकस कर लिया, काम कर लिया, यू कैन सिक्योर अ जॉब, यू कैन कंप्लीट दिस होल क्वालिफिकेशन इन 1 year time. अगेन, क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना मकसद हमारा ये नहीं है कि तुम आराम से बैठ के कर रहे हो. नो. हमारा मकसद क्या है? गेट ऑन टू द जॉब, बिकॉज यू नीड द जॉब. दैट इज वाई यू आर हेयर. अदरवाइज आप क्यों आए? वाई आर हेयर? इफ यू जस्ट हेयर टू वॉच द पोर्टल, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम. आई मीन, यू कैन वेस्ट योर टाइम इफ यू लाइक इट. कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज for 2 years time or 3 years time, do whatever you want. No, but that's सारा टाइम तुम्हारा ज़ाया जाएगा. You'll be wasting your time. Invest your time smartly, focus on the key tasks, move ahead, get into the job, complete your resume, complete your internship MCQs, complete your EduCall exams. ठीक है ना, एक ही एग्जाम है, इसमें मल्टीपल MCQs हैं. Get through the last interview session, आप MCQ अपने बनाओ, get into the Al Razak program. Passing the EduCall exam is going to help you. तुम्हें वो help करेगा get onto the job, because it will be our responsibility. दुनिया में इस वक्त trillions of dollars लगा रहे हैं. They are spending trillions of dollars in AI. Every world, दुनिया का जो total GDP है ना, is $100 trillion. Every section, every economy section is AI is penetrating into every economy section around the world, globally.
अगर तुम्हें, if you know how to harness AI and you can only learn it through this diploma in AI ops, then you will be leading on the forefront in innovation and starting new companies, whatever you want to do. That's the future. So for the next 25-30 years, focus on this. This is 2023. 2024 में भी यही cycle है. For the next 25 years, it's the same thing. By 2050, we will still be adopting AI in one way or the other. Okay? Because industry goes slowly. Now is the time for you to enter the market. Jazakallah khair. And there will be some series of more videos coming up which will explain more questions. Log on to the portal. Now you know what to study, how to study. Divide your time. Divide your time. 1 hour here, 1 hour here, 1 hour here, 1 hour here. 4 hours. I'm going as much as we can, as much as I can, while studying. If you're driving, agar tum drive kar rahe ho, just keep on listening to the lectures. I just want to go with DCCS, finish up all of those things, move on to DevOps on certain days. मैं कुछ दिन DCCS पढ़ूंगा, कुछ दिन pair up कर लो यार. Monday, Tuesday को DCCS and DevOps, Wednesday, Thursday को जो है ना SysOps and AI. Then the next on Saturday, Sunday, Friday, Saturday, Sunday, I do the labs. I spend more time, take notes, relax and read. ठीक है ना? That's what you do. If you keep on doing this, you will be able to secure the job, because that is our main objective. That's it. Jazakallah khair. Inshallah, I will see you in the next class. Assalamu alaikum wa rahmatullah.